Success. It's something you and I both yearn for. And we know that it takes hard work to achieve success. Today, I'll be speaking with someone who is the epitome of success and hard work, Zeba Sarang. Her money journey started when she was earning just 10 rupees a day. Today, she is the co-founder of I Think Logistics, a company that rang in more than 100 crore rupees in revenue last year. She is an inspiration to all. Let's learn about her journey and the financial lessons she picked up along this journey. Zeba, it's indeed a privilege and a pleasure to be hosting you today on Money Matters for Her. Thank you for joining in. Thank you, Mubina, for having me here. I'm very happy and excited. Let's start off, as usual, with a little bit of your childhood journey. Like I mentioned, 10 rupees a day, and now today you're running a 100 crore rupee company, I Think Logistics. So I'm sure the journey from there to today has been very remarkable, full of interesting anecdotes. Why don't you start off by sharing some of the financial lessons you picked up along the way? So 10 साल की उम्र में ही मैंने सोच लिया कि घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा. सो स्कूल से तुरंत आने के बाद हम सब भाई बहन मिलकर घर में पापड़ बेलते थे. पूरा दिन पापड़ बेलने के बाद हमें दिन का 10 रुपया मिलता था. वो 10 रुपया मतलब आज के लिए आज उसकी कीमत मुझे 1000 रुपये से भी ज़्यादा है. सो उस फाइनेंशियल्स का इम्पोर्टेंस लाइफ में बहुत था. उसके साथ साथ काफ़ी सारे फाइनेंशियल लेसन्स और स्ट्रगलिंग लेसन्स भी सीखे. और फाइनेंशियल लेसन्स की अगर मैं बात करूं सो अकॉर्डिंग टू मी एवरी मनी मैटर्स. मतलब बचपन में मॉम के पास एक डायरी होती थी जिसमें वो सारे एक्सपेंसेस नोट डाउन करते थे. हमारा दिन का जो बजट होता था वो 100 रुपीज़ होता था. वो 100 रुपीज़ में हमें सारा घर का खर्चा निकालना है. दूध हो गया, रोटी, सब्जी, दाल, चावल. वो एक्सपेंस मेंटेन करने से ये पता चलता था कि कल अगर आज का एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा होगा तो कल हमें दिक्कत होगी. सो अगर आई थिंक लॉजिस्टिक या कंपनी के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं सो हमने सारे एक्सपेंसेस को प्रॉपर्ली ट्रैक डाउन किया है. वी मेक श्योर कि हमारा कोई भी एक्सपेंस अननेसेसरी ना हो. जिस वजह से आई कैन से दिस वेरी प्राउडली, वी आर अ बूटस्ट्रैप एंड अ प्रॉफिटेबल कंपनी. Wonderful. I mean, I think it's very clear that when you have been through these struggles early on, वो आपके entrepreneur life में कैसे reflect होते हैं. So you've told us a little bit about how it has made you a very effective budgeter. So आपके cost savings and profitability में there's clearly an impact visible for I Think Logistics. Right. Could you tell us a little bit more about how these financial struggles have also made you a better entrepreneur? सो मुबीना, मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं 9 to 5 का जॉब लूँगी ना, आई कैन चेंज माई फाइनेंशियल कंडीशन वेरी इजीली. बट इफ आई वांटेड टू मेक अ बिगर एंड लार्जर इम्पैक्ट इनटू द सोसाइटी, आई बिलीव एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली और वन ऑफ द वे टू डू दैट. सो डीप डाउन मुझे हमेशा से ये फील होता था कि क्या पता कहीं किसी गली कोई और ज़ेबा किसी का वेट ना कर रही हो टू गेट आउट ऑफ दैट पुअर्टी लाइन. सो वही एक जो बेली फायर इन माई बेली है, उसी ने मुझे एवरी टाइम पावर दिया. एंड आई कैन से दिस, दैट इज़ द वन थिंग दैट हेल्प मी गेट आउट ऑफ माई बेड एवरी डे irrespective of any of the challenges which I face in my personal life or professional life. So that is the reason मैंने entrepreneurship choose किया and wanted to make impact to the society, and that is what I am doing it with my startup or with my company. And I'm sure the people around you who you grew up with now are today looking up at you as their role model perhaps. कि हमें भी बड़ा बन के ज़ेबा जैसा बनना है with a fire in your belly for entrepreneurship. Yes, definitely. I believe so. If you look back, is there a certain moment or a financial decision that you made, apart from of course entering entrepreneurship, but उसके अलावा अगर ऐसा कुछ decision जो आपने लिया हो which you think was the changing point in your career from where there was no looking back? Yes, there was a biggest moment which was a turning point in my career. So we three were techie by heart, nerdy. कैसे कोड करना है वो पता था, बट अभी उसको सेल कैसे करें वो बिल्कुल भी नहीं आता था. I literally ask और convince my co-founder कि give me a chance और opportunity जहाँ पर मैं सेल कर सकूँ एंड कंपनी को और ग्रोथ पे ले जा सके. They were hesitate obviously because मुझे सेल्स का एस बिल्कुल भी नहीं आता था. बट what I understood, मुबीना, so far कि in the world, in the life, everywhere it's about selling. A candidate is selling himself or herself to the company. We as entrepreneurs are selling ourselves to investor in future. The product is being sold to the customer. Everywhere is selling. So sales was a turning point that happened in my life,
एंड आपने वो फ्रेज सुना होगा शायद से, व्हिच सेज कि इफ लाइफ गिव यू लेमन मेक अ लेमनेड. मैंने ना उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया है, व्हिच इज इफ लाइफ गिव यू लेमन मेक अ लेमनेड एंड सेल इट. क्योंकि उससे आपको पैसे मिलेंगे एंड यू विल बी एबल टू ग्रो योरसेल्फ. Very well said. And I think this student data management business जो आपका था, I think that's something that slowed down, and then you had to pivot and you started, I think, logistics. Right. Now, it would happen, and you know, naturally, human nature ऐसा है that if your first venture fails, you feel very discouraged. You think that, oh, I'm not cut out for this. Maybe I should join a 9-to-5 job or so on and so forth. What made you start another business? You know, dust yourself off and pick yourself up, जैसे बोलते हैं. What made you go that extra mile and go ahead and give entrepreneurship another shot? So entrepreneurship ही करना था, business ही करना था. So 2011 में जब हमने कंपनी स्टार्ट की, सॉफ्टवेयर स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके साथ तुरंत ही वन ईयर में वी पाइवटेड टू वेब डेवलपमेंट. क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बनाया था स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन था, और उस वक्त द इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी वॉज मूविंग इनटू क्लाउड बेस्ड. सो हमने तुरंत ही पाइवट किया एंड वी वेंट इनटू कस्टमाइज सोल्यूशन डिजाइनिंग फॉर द ब्रांड्स. जो हमने वेब डेवलपमेंट शुरू किया, वो काफ़ी अच्छा 2-3 साल तक चल रहा था. बट वी थॉट कि हमें खुद का ब्रांड बनाना है, क्योंकि प्रोडक्ट से हमने स्टार्ट किया था. नाउ वी आर सर्विंग अदर पीपल एंड अदर ब्रांड्स. खुद का ब्रांड बनाना था, इसीलिए 2015 में व्हेन ई-कॉमर्स इंडस्ट्री वो बूमिंग, सो हमने खुद का ई-कॉमर्स वेंचर स्टार्ट किया. वी ऑलवेज अंडरस्टूड कि मार्केट कहाँ जा रहा है, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर. So we went for an e-commerce journey. Unfortunately, we were not able to grow that business because we failed with the logistic challenges. Just over a coffee and sandwich, I would say, we had this discussion with them. They were friend of my co-founder, and we thought this is a bigger problem which we can solve, and with our own expertise. That is the reason we started I Think Logistic in 2017. So to answer your question, Mubina, we never consider failure as a failure. We always took that as our next stepping stone. मतलब अपॉर्चुनिटी देखी, प्रॉब्लम देखी, और उसको फेलियर को नेक्स्ट स्टेपिंग स्टोन समझा हमारे स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए. सो इट वाज नॉट अभी बंद करना है, सोल्यूशन नहीं था. 2011 से 2018 तक आई वुड से माई ओन पर्सनल फाइनेंशियल जर्नी वॉज वेरी 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 बैड. 2011 में ही आई लॉस्ट माई फादर. सो एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ना, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी. You know, they say that when you take a 9-to-5 job, it's almost like an addiction because Right. you get a monthly salary. Do you think that when you were going through that tough time in 2011, and if you had, let's say, taken this 9-to-5 job, do you think you would have never been able to become an entrepreneur? My purpose is always about giving back. क्योंकि सच में बुबीना, I understood the importance of education, power of education. That happened because I got a support from an NGO. अगर वो नहीं मिलता, I could have not been here. I took entrepreneurship जहाँ पर hardly मुबीना, we were earning 5,000 rupees. Hardly. उसके साथ different side hustle करना, वो तो अलग ही था. I was also selling customized design mug. That was my side business as well. To supplement your income. Yeah. Customized gifting mugs, where I was visiting after office hour, 7 to 9, visiting different gift shops and asking them, do you need this kind of services? So I were providing them gifting solution, customized gifting solution. अगर इतना ही conviction हो, then nobody can stop you really Nobody. to become successful. Nobody. Very true. And I think it also shows the faith you had in yourself and the abilities to become an entrepreneur, which is, I think, very admirable. And the best part is that while you were earning only 5,000 a day, and of course you were supplementing yourself with, these other sources of income, you also managed to build a company without any external funding. How challenging was that bit? Always people consider कि अगर पैसा होगा तो ही business बनेगा. But this is a myth and that is not correct. पैसा होगा, that will be an additional benefit to you for sure. But यही होगा तो होगा, that is not the case. So मेरे understanding के हिसाब से simply that is what the funda or framework I have implemented in my company, or we have implemented in our company, which was 5P का एक framework मैंने define किया है. First P would be your purpose. I always said this thing. आपका purpose क्या है? Why are you doing it? Just because आपके friends कर रहे हैं, just because family ने बोला है, just because college
में एक वेव चालू हो गया है या एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो गया, करना है, सबको करना है, सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, या वो टैग चाहिए एंटरप्रेन्योर का, क्यों करना है? सो अगर जब आपको उसका आंसर पता चल जाएगा ना, तब दैट विल बी मोर लॉन्ग टर्म जर्नी, दैट इज़ द कोर ऑफ एवरीथिंग. सो अगर आज मैंने एंटरप्रेन्योरशिप इसीलिए चूज़ किया होता कि मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, तो सीरियसली पैसे कैन बी अर्न इन एनी ऑफ द वे. बट अगर आपका पर्पस बिगर है विथ मनी, देन यू कैन गो फॉर द लॉन्ग टर्म. फिर आपको अगर कोई भी चैलेंजेस आ रहा है ना, ट्रस्ट मी, कोई भी चैलेंजेस विच आई स्पोक अबाउट, financial challenges, personal challenges, we as a human go through lots of issues in our personal life also, emotional turmoil, health issue, but if purpose is bigger than everything, you will never stop. Another important P according to me which I have learned is problem. What are you solving? You are the only one who is solving. Is there any other competitor of yours are solving? How better you are solving as compared to them? How bigger that problem is? मतलब अगर मैं आई थिंक लॉजिस्टिक के पर्सपेक्टिव से बताऊं, सो वी हैव अंडरस्टूड कि ये प्रॉब्लम इट्स नॉट ओनली फॉर अस, दिस प्रॉब्लम इज एग्जिस्टिंग फॉर अराउंड करंटली 150K e-commerce sellers who are facing these challenges in the logistic inefficiency. So are we able to solve that problem? At what extent? Another very important P comes is people. Business is always built around people, in and around people. Whether your customer, people. Whether your team, people. Whether your vendor, your service provider, they all are people. So you have to be in and around with right set of people. Mentor is also playing an important role in your growth journey. Mentor, they all are people. Fourth P comes your process. Process is how are you doing it, and it has to be keep evolving. What take you here will not take you there. So when we started I think logistic, our customer onboarding process, our billing process was different. Now with the set of 10,000 e-commerce sellers in our platform, our onboarding process, our billing process, our remittance cycle has been changed. If it is not evolving, you will be behind the market trends. Process cannot be the same. Keep evolve yourself and learn from it. Last but not the least, favorite P comes your profit. If you have to run your car, मतलब कंपनी को रन करना है एज अ कार, यू नीड फ्यूल, राइट? टू रन अ कार यू नीड अ फ्यूल. सो फ्यूल कहाँ से आएगा? पैसे से. सो टू रन अ कंपनी यू नीड अ प्रॉफिट टू री यूटिलाइज इट. सो अगर आप कंपनी रन कर रहे हो विदाउट मेकिंग एनी प्रॉफिट, जस्ट मेकिंग इट लॉस, कितने टाइम तक जाओगे? हाउ लॉन्ग यू विल गो विदाउट प्रॉफिट इन योर पॉकेट? सम टाइम यू विल हैव टू स्टॉप. बट अगर प्रॉफिट है, your cycle, your company, your car will keep running and you will reach the destination where you have aimed for. So that is the simple 5 P I've learned from. I think with these 5 Ps, you've motivated a lot of budding entrepreneurs, especially women entrepreneurs, that पैसे के बगैर भी simply by relying on the excellence of your business and the profit it churns, that you can actually grow your business, or as we call as a bootstrapped business. But still, if you could give some advice कि अगर आज किसी को एक bootstrap business build करना हो, what would that advice be? So not about bootstrap, but overall if I have to give advice to women, see, हम बात कर रहे हैं मनी की, so one advice तो नहीं दूंगी मैं. It always about more. It's always about money. It always about money and it always about more. जितना ज़्यादा होगा उतना benefit होगा हमको. So one very important advice which I will like to give to any budding entrepreneurs, women entrepreneurs especially, believe in yourself. If you will not believe in yourself, nobody else will do that. See, a girl coming from a Mumbai slum, जहाँ पर literally हमारा घर, मैंने बताया आपको 10 by 10 का घर था, आज मेरा कैबिन उससे बड़ा है. That could have been only possible if I believed in myself. There will be challenges where you will feel like giving up. अभी नहीं होगा, अभी मैं नहीं कर सकती. But if you have that belief in yourself, you will be able to do it. Would I be correct in assessing that you are a risk taker? The fact that, you know, you started one business and then you started the next business and you stuck onto your entrepreneurial journey. Would I be correct in saying that, you know, Zeba is a risk taker and you think that that's what's brought you to where you are today? एक शायरी बोलना चाहती हूँ. So, मिली जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह वो है जो घर से निकले ही नहीं. Which means if you are not taking risk,
if you're not getting out of your comfort zone, you'll not be able to achieve what you are looking for, right? So यहाँ पर अब तक हमने बात की कि क्या मैंने सही किया, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि क्या गलत किया और उससे लर्न करके हमने रिवॉर्ड एज अ एक्सेप्ट भी किया. सो फर्स्ट देयर वाज one thing which we made a mistake about diversification. The same I applied now in my personal financial journey which I have recently started. So diversification का मतलब ये था कि pre-COVID our customer based were from one specific region, one specific product category. जैसे textile था, सूरत से हमारा कस्टमर एक्विजिशन काफ़ी बेटर था, काफ़ी ज़्यादा था. सो 100% के रेशो में कहूँ, सो 80% वर फ्रॉम दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी टेक्सटाइल एंड 20% वर अदर. When COVID hit, the logistic supply chain has or government has made a decision कि only essential products were allowed to ship and हमारे पास वो कैटेगरी के कस्टमर्स काफ़ी कम थे. Then we worked our entire strategy. We started onboarding a customer or aggressively went on those market जहाँ पर हमें health and personal care, pharma, medicine, beauty, those category who were allowed to ship the customers. So we went on that segment and we acquired those customer and made now our customer base business region wise is diversified in all of this category, all of the region. So अगर मैं investment perspective से खुद की बात करूँ, so I thought I've learned that thing कि मुझे investment में I should not put all eggs in one basket. If I'm investing in one portfolio, mutual fund हो गया, SIP हो गया, there should be some investment which I will be doing. I have to do it my properties as well. So diversification, one path which I took and I'm doing it very well, I believe. So that is one thing which is there. I love how you are applying the principles of what you learned in your entrepreneurial life in your personal financial life as well. So let's talk about this entire concept of financial literacy, because I think it's from your business that you gained a lot of financial literacy. Tell us about this entire journey towards financial literacy. Did you get, advice from perhaps family, your teachers, mentors, friends, and also what did you consciously take as efforts to educate yourself on money management? So Mubina, according to me, in today's world, a woman who controls her finances control her future. फिर वो चाहे कोई homemaker हो, कोई professional हो, कोई student हो या कोई entrepreneur. The power of financial literacy will give you not only wealth, but it will give you or give us a freedom, a choice and security. So मेरे पास कोई financial degree qualification नहीं था. But yes, I always wanted to make sure कि मैं उस चीज़ को learn करूँ. Now that learning or the literacy will help me to raise our funds, and we are in the process of fundraising as well. That is not a small amount. That will be around 100 crores of funds we will be raising. I think resources are there everywhere. It's just about the women going out there and, like you mentioned, asking for help, which sometimes we tend to not do. Right. Do you think rather that women face any kind of challenges when it comes to accessing financial resources? So let's say, for example, loans or investor funds. First of all, definitely there are lack of resources available for women entrepreneurs related to finances. And another point is, we are also not getting there. We are also not asking for it. जाओ, पूछो. There will be people who will assist you. आज नहीं तो कल मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों. But we consider कि नहीं मिल रहा तो ठीक है. Okay. We don't have our own voice also in our home. फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल डिसीजन आज भी घर के मर्द ही लेते हैं. अगर इनकम भी अर्निंग वुमन है, देन टू वी शुड प्रमोट दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स एंड दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव, लाइक द कॉन्वर्जेशन विच वी आर हैविंग टुडे. इट should reach to the masses. People should understand the importance of money, the importance of education. So I believe ये program के through we can get one thing. Women-led startup should be there. Women-led startup the number is increasing though from last year or from one decade, but then to जो number होना चाहिए in terms of investor has to significant. It should not be 20 में से 2 है. So Zeba, what is the best decision that you've made during the course of your journey? 2018 से we have started getting some income. Profit आना actually में शुरू हुआ. 2011 से 2018 तक फाइनेंशियल कंडीशन मेरा पर्सनली बहुत ख़राब था. मतलब लिटरली वी वर स्टेइंग इन द रेंटेड अपार्टमेंट. घर का रेंट भरना है, होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, होगा, काफ़ी सारे चैलेंजेस फाइनेंशियल थे. 2018 से हमने पैसे कमाने शुरू किए, प्रॉफिट आना शुरू हुआ. सो आई विल जस्ट गिव यू अ नंबर. मतलब
हाइपोथेटिकल नंबर लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल 50,000, आज 50,000 का प्रॉफिट मंथ 1 में हमको मिल गया. आइडियली वी आर 5 को फाउंडर्स, सो इक्वली 10,000 रुपीज़ वो 5 को फाउंडर्स को डिवाइड हो जाना चाहिए था, राइट. एंड आई वॉज ओके, वैसा ही होगा, सिचुएशन वही है, सिनेरियो वही है. बट माई को फाउंडर परेश एंड निकुल, दे सेड के ज़ेबा यू टेक ऑल दिस 50,000 विथ यू, बिकॉज तेरा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, यू डोंट हैव फादर एट योर होम जो इसका इनकम होगा, यू आर द फर्स्ट वन एंड ओनली सोर्स ऑफ इनकम एट योर होम, हमारे घर पे तो मैनेज हो जाएगा. यू टेक दैट 50,000 रुपीज़ और नेक्स्ट मंथ से अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमारा जनरेट होगा, सो वी विल डिवाइड एंड डू दैट. सो ट्रस्ट मी मोबिना, दैट वन थिंग, मतलब वो 50,000 रुपीज़ वॉज नॉट समथिंग बिग, इट इज़ अ बिग अमाउंट एट दैट टाइम ऑल्सो एंड नाउ ऑल्सो. बट पैसे जब आते हैं, वी हैव सीन हाउ पीपल आर चेंजिंग. बट आई हैव सीन दैट सिनेरियो, वहाँ पर उन्होंने मुझे वो 50,000 रुपीज़ दे दिया. आई ट्रूली बिलीव इफ़ आई वॉज नॉट अराउंड द राइट पीपल, मतलब जर्नी यहाँ तक इतने ईजीली नहीं पहुँच सकती. 5 को फाउंडर के साथ काम करना, there will be scenario जहाँ पर we dispute in terms of discussion, in terms of some certain points, but I have that in my mind कि जब मुझे वो difficult phase था, at that time these people were with me. So अभी कुछ भी problem हो, कुछ भी scenario हो, we will build this company to the next level with our individual support. So वो 5 हम लोग इस तरीके से मुट्ठी बन के आज काम कर रहे हैं मुबीना. So you built, I think, logistics without any external capital. What were the biggest financial hurdles you faced because of this bootstrapping option that you opted for, and how did you navigate them? So 2018, मतलब 2017 we started I think logistics. 2018 within a 1 year के duration में we faced that hurdle or crisis. So क्या हो गया था, one of our biggest customer, he gave us good number of orders initially and big fake promises कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, and he defaulted our 25 lakh rupees. मतलब उस वक्त 25 लाख रुपीज़ क्या हमारे अकाउंट में 25,000 रुपीज़ भी नहीं थे. बट वॉट वी डिड, मी एंड माई को फाउंडर, वी थॉट कि एंड वी हैड टू पे दैट 25 लाख रुपीज़ टू आवर वेंडर. वो पैसे हमारे नहीं थे, वो लॉजिस्टिक पार्टनर को हमको पे करना था, रादर देन जस्ट ड्रैगिंग द डिस्कशन कि हाँ पेमेंट हो जाएगा, कर लेंगे, देखते हैं. ऐसा जनरली पीपल डू फॉर द पेमेंट. वी डिसाइडेड कि हमें ये जो चैलेंज या क्राइसिस फेस हुआ है, लेट अस गो and discuss the same with the logistic partner. So me and my co-founder Nikul, we traveled from Mumbai to Delhi. Flight के वैसे भी जुगाड़ से कर लिए and we traveled there. वहाँ पर काफ़ी टाइम वेट किया हमने उनके CFO को मिलने के लिए, but the wait was worth. वेट करने के बाद उनका अपॉइंटमेंट मिला. We explained them about the situation and we asked him a chance कि can we pay this amount in an installment rather than just paying 25 lakh rupees upfront. He agreed. मुबीना, अगर मतलब वो चांस नहीं मिलता ना, एंड वो चांस हम नहीं लेते वहाँ जाने का, बात करने का, एंड दैट पर्सन, दैट CFO was so kind enough, he agreed and he gave us that chance. That could have been the last day of I think logistics. पैसे डिफ़ॉल्ट हो गए, कुछ नहीं कर सकते थे हमारे पैसे. they could have taken that money by themselves. मतलब थोड़ा लॉजिस्टिक में COD अमाउंट लॉजिस्टिक पार्टनर के पास होता है, so they had the amount. बट अगर वो रिलीज नहीं होता तो we could have not paid that amount to our other customers जिनका वो COD अमाउंट होल्ड था. So that was the scenario. So what I understood by this financial hurdle, financial crisis, and it's simple thing. Communicate. Don't go out of hosting yourself with the vendors or with the customer. There will be challenges. Financial challenges होंगे, other challenges होंगे. Just go out, communicate. They all are human. They will understand the situation. They will help you. So I believe they trusted us at that point of time. And that trust paid us a big way, and we have been able to succeed after that very well. And I believe he also didn't regret that decision which he took and gave us the chance. So that is what biggest financial hurdle faced by us. All right, well, some quick questions, our rapid fire round. To start with, what's the first thing you splurged on when you became financially independent? Very interesting. So मैंने ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखी थी, ZNMD. So जहाँ पर I was very fascinated about Katrina Kaif. मतलब मुझे बहुत पसंद थी as an actress also, but the character which she played in that movie was amazing. मतलब इंडिपेंडेंट, बिंदास लड़की, जहाँ जाना है, जो करना है,
लिविंग हर लाइफ विद द फुलेस्ट. सो मैंने खुद के लिए 2 years ago आई बॉट अ बुलेट बाइक. एंड बस उसी की तरह कहीं भी मन कर लिया, स्टार्टेड राइडिंग एंड बिंदास से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, डूइंग व्हाट आई लव एंड लविंग माई सेल्फ. So you travel to office on the bike? Sometime, yes. Sometimes. Okay, wonderful. One financial habit that has helped you succeed, according to you? The financial habit, one thing which is not spending on the things which I don't need, but that is, I took a bullet after I have fulfilled all my need. So the thing which you don't need now, don't spend on it. That is what I have learned. मतलब भले ही फिर your college में लोग क्या कर रहे हैं, your neighbors are what they are buying. If you don't need it and you don't have that money, don't do it. If you could give your younger self one piece of money advice, what would it be? See, very honestly, I started my investment journey very late. My personal investment journey, I would say. So one important financial advice I would like to give to all of you or all of us would be invest early, invest as much as and at the right place. That is important. A business expense that you have incurred that you never regret? My entire conversation in and around were people. So one thing which I will never regret it, investing in the people. Whether it is hiring the right people, giving them training, or building a great culture by spending money. So that is what I will never regret. Wealth or impact? If you had to choose one, which would it be and why? Obviously and definitely impact for me, because and right now also 2022 से I think logistic में whatever profit we are getting, certain X percentage of that profit, not that huge amount but little bit whatever we are earning, we are donating that money to education and medical need of the needy people. And to agree that decision, my co-founders also supported me. They could have said this thing that तेरा विजन है, तुझे हेल्प मिला था किसी से, हमको तो नहीं मिला था, वाई हमारे प्रॉफिट में से तुझे देना है, यू आर टेकिंग आउट द सैलरी बाय योर सेल्फ, उसमें से जो देना है वो दे दो. बट नहीं, दे ऑल्सो सपोर्टेड माई कॉज एंड नाउ एंटायर आई थिंक लॉजिस्टिक के प्रॉफिट से हम वी आर एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड दैट गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ प्राउड एंड हैप्पीनेस के आई एम एबल टू एक्ट और बी अ कैटलिस्ट इन समवंस लाइफ. मतलब द वे आई हैव रिसीव द हेल्प, मतलब सच में मुबीना, मतलब आई कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विदाउट education and without the support which I have got from the NGO. What's the one financial mantra you live by? See, for me, money is always a byproduct. मतलब I live by a purpose greater than money. थोड़ी बॉलीवुड की फ़ैन हूँ. So आमिर खान का 3 Idiot का एक डायलॉग है, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी. अगर हमें वो मनी के कॉन्टेक्स्ट में बोलना होगा तो पैसों के पीछे मत भागो, पैशन के पीछे भागो, पैसे झक मार के पीछे आएंगे. Wonderful. I think Zeba, this was a very inspirational conversation. The conviction and the objective behind which you chose the entrepreneurial life has set you on that path to success, and it's still a long runway. I'm sure you have many miles to go. Thank you so much, not just for joining us today, but being an inspiration to so many entrepreneurs out there. थैंक यू मुबीना. मुझे एक एंड करना है ये एंटायर कॉन्वर्जेशन विद अ पोएम विच आई हैव ऑलवेज और डेली लिसन व्हेन आई गो थ्रू द डाउनफॉल ऑफ माय लाइफ. सो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. एक लास्ट स्टेंजा है, असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. What a wonderful shairi, and I don't think we can end this episode in any better way. So once again, Zeba, thank you so much. Thank you, Mubina. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.